So hello everyone, my name is Saurabh and today we have actually done the question. Although, let me tell you what happened. So I actually recorded the video. It took me about 43 minutes to solve this specific question. Okay? I looked at the recording here. It said, somewhere around 43, 45. I don't exactly remember कितना लगा था लेकिन around 40 to 45 minutes लगा मुझे in order to solve this question. It took me a lot of errors. बहुत सारे errors हुए भाई आज. बहुत दिमाग खराब हुआ इस वाले क्वेश्चन में. For the past 43, 40 जो भी जितने भी minutes था, I have been struggling. Now, I could have uploaded that long video. The issue is I don't have enough of time to upload the video because it takes a lot of time. It takes about an hour to upload, and I have to do a lot of work post this video. So I will make it 10 minutes short. I mean, basically 10 minutes longer. I will be solving this specific question again and uploading that specific 10-minute slot. So if you're watching this video, this is a 10 minutes or something around that video. And this time I will be in the earlier videos I might not have explained the question, but this time I'll be explaining you what has actually happened, although I haven't submitted any of the solutions. So it's just we have just passed the test cases in our there is a possibility that this specific answer could be memory limit exceeding the memory, could be exceeding the time limit. We'll see. I have not checked the time optimization. I did this brute force way. The brute force way took me about 45 minutes. So we'll see in the solution. As you can see, in here I have created a copy. I will be solving this again. This is your solution.cpp. This actually took me about this much, a lot of time. Now I can't upload this again and again, so we'll be doing this question again. So let me, I will be first doing the question and then be explaining you the core concept behind what I'm, if it get accepted, in that case I mean, basically we'll be doing this. Integer z, integer c int is your 1, I mean 0, and then we basically iterate over every word in the words array. For every word I have the integer wd, actually give it this name, right? Wd az is your word dot size, and on every iteration, what are we supposed to do? We were supposed to put it into the function. We'll just oh sorry, कहाँ था? Yes, we have the word. Yes, if fz plus count plus of my wdaz, if it basically exceeds the max width part, if it exceeds the max width part, so at first we solve the, if it doesn't exceeds the maximum width part. Now if now if it exceeds the limit path, so what are we going to do is we leave it as it is, and basically what happens is tmp as your 0, tmp becomes empty, and what happens before that, we basically process our results every time. ठीक है, क्या हो रहा है रे? हाँ, क्या हो क्या रहा है? res ना, हाँ, res dot basically go push back in the init है या nd है? nd, yes. We give it the temporary array, साथ में I'm giving it the is last boolean. So is last I will have to declare in here boolean is last is initially false. Now what happens post it is I will be passing it the is last boolean, साथ में I will be passing it the size and the maximum width. Perfect.
now it's going to push it in. इसके बाद में जो मेरा tmp है, जो हमारी टेम्परी एरे है, टेम्परी डॉट pushback the current word, है ना, we are pushing in the current word. Also the count becomes +1, sd plus equals my w not sz. I think this is fine. If this happens, this yes. Let me just check, have we made any error in this portion? Where are we? Yes. Result dot pushback dot clear and push. Perfect. I mean, this is clearing, this is word dot size. Okay, this is your this, and count equals your 1. ठीक है भाई, हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट येस दिस इज़ क्वाइट अ नाइस क्वेश्चन एंड आई हैड टू थिंक अ लॉट फॉर दिस. ठीक है, not clear your this. I think now we have made the function perfect. Size in this word dot size, and this count is your 1. Perfect, we are done with this. Now what happens if it is less than or equals to the size limit of it? Okay, now for those words what is gonna happen is we push that word to the original matrix and count plus plus cnt plus plus happens, then the size plus equals the word size, and we are pushing in temporary dot pushback. The original word is getting pushed into this. I think this is perfect. Count and size +1, this perfect. Now I actually made this approach, I mean this specific approach, I basically made this specific program in my first 10 to 20 minutes. Okay, the only problem was with the last part, which took me about another 20 minutes to figure out this last part. ठीक है, बहुत ही इजी लग रहा है, बहुत ही इजी लग रहा है, बट मैं इसको हाईलाइट ही नहीं कर पा रहा था कभी भी. Now is last becomes true, and res dot pushback. अबे यार ये मैं क्या करता हूँ, res dot pushback मेरे पास में इंडिविजुअल एलिमेंट को जब तुम प्रोसेस करोगे, in that case I will be providing you the temporary array, will be providing the is, I will be providing the s, I will be providing the maximum width. Perfect, maximum width, बिल्कुल सही, and then we finally return the res, है ना, we finally return the resultant. This is our vector string. Now we come on to this was also one of the important parts of this specific question. इसमें भी हमने काफ़ी सारे errors किए थे, which again took us a lot more time, which then it could have been taken me to solve this question. So what this question does is it processes the individual value. ठीक है, now एक second, answer, and if not is last. Now if we are not at the last value, then we process the string differently, I mean produce the string differently, and if we are at the last value, then we process it differently. Okay, now if we are not at the last value, also let me create a space for if we are not at the last value. Now just in case if we are at the last value, I mean if we are not at the last value, what we do is we basically loop over every value. I mean, see, you just see me, integer spaces is your max width minus of sz, then integer slots is your spaces nahi, actually it is integer n is your tmp dot size and n minus of 1.
Perfect. Now we loop for every space in this specific array. Now, if my slots is 0, what we are gonna do is we just put a for loop or a while loop on every value or basically produce a string. Any cast कहाँ से आ गया ये string आंसर आना चाहिए था ans हाँ. So if the slots is 0, what are we gonna do is answer plus equals my tmp's 0 value, and then we set a while loop to figure out or basically fill up the trailing zeros. ठीक है ना? हाँ, while my answer dot size is basically less than the max width, what are we gonna do is answer plus equals my this. I think this is fine. This is what we have done in here, right? Just in case this is yes, return the answer in this specific case. After running this while loop, return the answer. Perfect. बिल्कुल सही. This is for the case of if it is equals to 0. Now, just in case if the slots are not 0, there are a fixed number of slots. Perfect. If there are a fixed number of slots, what are we gonna do is मेरे पास में spaces and slots आ चुका है. अब मैं यहाँ पर basically दो numbers निकालूँ. Integer, the part which has to be evenly distributed, so let's name it as EV. This is the part which has to be evenly distributed to the every value. ठीक है? Spaces divided by the slots, and then there is the part which is the remaining. ठीक है? It you can do it as spaces ampersand your slots, or the safer way to doing this is basically EV. ठीक है? Individual slots और basically spaces minus of slots बोल सकते हो तुम. नहीं, EV होगा क्या? ऐसे वैसे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, लेकिन I did earlier using this specific method and it worked, so हम जो safer option है उसकी तरफ जाएंगे. So EV, which is individual values that has to be embedded into the case, and remainder is your, you know, what do we call it as? The remaining value that has to be added to the every section. Now what are we going to do for this is कि we are basically going to run a for loop, and every time, see this is what are we, मेरे को मैं भूल रहा हूँ, अभी भी किया मैंने और मैं अभी भी भूल रहा हूँ भाई, क्या करूँ भाई, आदत से मजबूर. I think this is fine. So what we did in here is मैंने यहाँ पर basically क्या किया है, इंडिविजुअल मतलब मेरे जो एलिमेंट है, जैसे मैंने लास्ट में जस्टिफिकेशन आ रहा था वहाँ पे, तो जस्टिफिकेशन वाली जो वैल्यू थी दैट आई एडेड टू दी ओरिजिनल आंसर मेरे पास में, एंड देन आई अपेंडेड मेरे पास में स्पेसेस, इवन टाइम्स आई अपेंडेड दी स्पेसेस. ठीक है? नॉट इवन टाइम्स, मतलब बेसिकली जितने भी मेरे स्पेसेस हैं वो सब मैंने उसमें अपेंड किए, एंड देन if it is less than the remainder, and we basically answer plus equals to your this. Now I think there should be remainder should be अच्छा हाँ, for the left most side तो उसमें remainder माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Perfect. Now this is what happens when we are appending these much values. Perfect. और क्या होगा इसके अंदर? Is there anything which I'm missing? इसके बाद में डायरेक्टली वी रिटर्न दी आंसर और व्हाट? आई डोंट थिंक वी रिटर्न दी आंसर. बेसिकली जो लास्ट एलिमेंट है उसको प्रोसेस करते हैं, है ना? यस. आंसर प्लस इक्वल्स टू योर टीएमपी एन माइनस ऑफ 1. Perfect. Now if we are at the last value, now processing last value is quite different. This is left justified. मेरी पूरी पूरी जो एरे है it is being left justified. By the way टाइम कितना हो गया भाई? इसमें तो नहीं 20-25 मिनट लगेंगे, 14 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं भाई. We have to do make things faster. So this is what we are doing in the, so just to make things faster यार, I actually don't have more time. 43 minutes already on one question. So we are basically putting this whole this into जो भी कहते हैं इसको, ये वाला सेक्शन, else वाला सेक्शन, and finally we return
the answer, I think this is fine. And is there anything we're remaining with? नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन भी करना है, सो एक्सप्लेन तो तब करेंगे जब वो पास होगा। अभी हमें नहीं पता कि इट वुड बी अ टाइम लिमिट एक्सीड और स्पेस लिमिट एक्सीड, हमें नहीं पता अभी। और वो भी पता कर लेते हैं, हमारी देखते हैं कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, कहीं पर और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह कर सकते हैं हमारी तरफ से, हमारे एंड से। तो अम, ठीक है। ठीक, so we are basically passing these values by reference. Should I pass these values by reference, जैसे कि मेरे को डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस पे जाना पड़े, बार बार उसको कॉपी ना करना पड़े? साइज को भी बाय रेफरेंस पास अगर मैं कर दूँ तो इस लास्ट भी बाय रेफरेंस पास हो जाएगा, मॉडिफिकेशन अपने आप कर लेगा ये, कुछ करने की जरूरत नहीं है वैसे तो यहाँ पे। अब इसका टाइम लिमिट देखते हैं हमारी इस वाले फंक्शन का। इट इज़ योर मैक्स विड्थ। व्हाट कुड बी दी मैक्स विड्थ? मान ली एक कैरेक्टर हुआ -1, मैक्स विड्थ कितनी हो सकती है? मैक्स विड्थ 100, सो देयर वुड बी 100 ऑपरेशंस फॉर द लास्ट लाइन। दिस इज मतलब फॉर द नॉन लास्ट लाइन, लास्ट लाइन के लिए 100 ऑपरेशंस यहाँ पर एट मैक्स। ओमेगा, ओमेगा बिग ओमेगा ऑफ एन इज योर 100, मतलब 100 ऑपरेशंस ऑन एवरी लास्ट वन, है ना? ठीक है। और आई गेस तीन ही है वहाँ पे, है ना? वर्ड्स डॉट लेंथ मेरे पास में 300 वर्ड्स हो सकते हैं। वर्ड्स ith डॉट लेंथ मेरे पास में 20 हो सकती है। आई थिंक दिस दिस शुड पास मेरे पास में। सो इसकी जो टाइम लिमिट है इट इज़ क्वाइट ओके। दिस इज अबाउट 100 टाइम्स ऑफ 3 कितना हुआ? 300 ऑप्टिमाइजेशन एन। आई मीन बेसिकली जो भी इंडिविजुअल वर्ड लिमिट होती है 100, है ना? 100 फॉर एवरी वैल्यू। कितनी बार मैं प्रोसेस कर रहा हूँ? दिस इज अ फॉर लूप फॉर एवरी वर्ड, दिस डज दिस, फाइन। आई थिंक दिस शुड गेट एक्सेप्टेड इन माय फर्स्ट गो। Copy this, control all, this control V, this is the same code। तो कोई वो फाइनल चेक कर लेते हैं, वो देख लेते हैं मैंने कहीं पर कोई एरर तो नहीं किया है इस वाले में, कोई मिस 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 फिट। लेट्स ट्राई एंड सबमिट इट, क्रॉसिंग द फिंगर्स कोई मेमोरी लिमिट या टाइम लिमिट या टेस्ट केस ना फेल। ओ माय गॉड, एक्चुअली पास हो गए भाई हम लोग। सो ये तो हमारा कोड था, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। सो व्हाट हैपेंस इज कि देखो, हियर इज द एक्सप्लेनेशन। सी, रुको टेस्ट केसेस के साथ में सिखा दूँ। Let's say this is our test case. What is actually happening in this specific question is कि we are given a set of words, जैसे इसमें this is an example of text justification, ऐसे set of words दे रखे हैं और we are being given कि इन words को we have to fit them into a specific word limit, मतलब length दे रखी है हम लोग को 16 की। तो हम लोग इनको क्या है, एक 16 के सेट्स में we have to distribute them। परफेक्ट, दिस सिंपल। सेट ऑफ वर्ड दे रखे हैं, वी हैव टू डिवाइड एज मेनी एज पॉसिबल। बेसिकली हर एक जो सब वर्ड है, हर एक जो सब स्ट्रिंग है, उसको एज मेनी एज स्ट्रिंग्स पास ऑन करनी है, जिसकी लेंथ जो एट मैक्स हो सकती है, एट मैक्स बोलो या फिर दैट इज फिक्स लेंथ, कम नहीं होगी ज़्यादा नहीं होगी, दैट इज 16। परफेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब इसमें 3 से 4 केसेस और ऐड हो जाते हैं विच इज एक्चुअली मेकिंग दिस क्वेश्चन हार्ड। द फर्स्ट थिंग इज कि वी हैव टू एम्बेड एज मेनी एज पॉसिबल वर्ड्स इन दैट स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग, जिसके बीच में वर्ड्स होने चाहिए। बेसिकली क्या है, मेरे पास में लेट से मेरी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो है मेरे पास में दिस, एक स्पेस मिनिमम होना चाहिए, दिस इज एन, और फिर इन सभी के बीच में एटलीस्ट एक स्पेस होना चाहिए। दैट इज व्हेन वी कॉल इट एज मेरी जो एक स्ट्रिंग वैलिड होगी। वैलिड होने के लिए भी अब यहाँ पर ये नहीं कर सकते हम लोग कि जो बीच की स्पेस खा गया, फिर यहाँ पर कोई बीच की स्पेस खा गया, फिर कोई वर्ड खा गया, नहीं। वर्ड शुड बी सेपरेटेड बाय एटलीस्ट वन स्पेस। परफेक्ट। अब ये सीन है कि ये जो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग, अब मैं इसकी लेंथ बताता हूँ आप लोगों को। ये जो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग है इसमें 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसकी 10 मेरे पास में लेंथ होगी। अब इसके बाद में यू हैव टू एम्बेड एग्जाम्पल ऑल्सो, अब इसकी 11 होगी। अब मेरे पास बचे कितने कैरेक्टर्स? 5 बचे, 16 में से 5 और आ सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल की लेंथ है मेरे पास 7, तो 7 कांट बी फिटेड इन है। तो मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में लिख सकता हूँ, जो भी एग्जाम लिख सकता हूँ, और इसके बाद में विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि मेरे को पूरा पूरा वर्ड डालना है उसमें। सो वॉट आई डिड वॉज कि मैंने सबसे पहले ये पता किया कि एक फंक्शन के अंदर व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फिट इन। समझ रहे हो? इस स्पेसिफिक फंक्शन का काम यही है
दिस फंक्शन बेसिक और नॉट दिस, यहाँ पर व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं हर एक वर्ड के ऊपर जा करके आई एम बेसिकली फाइंडिंग आउट कि मैं एक स्पेसिफिक लाइन में, एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग में कितने मैक्सिमम वर्ड्स डाल सकता हूँ। सबसे पहले मेरा ये काम था। सो मैंने पता किया कि दिस इज एन एग्जाम्पल। सो मैंने बेसिकली इंडिविजुअल वैल्यूज़ का ऐड ऑन करके, इन सभी की लेंथ का काउंट रख करके आई ट्राई टू फाइंड आउट कि इसके अंदर कितनी एट मैक्स वैल्यूज आ सकती है। दिस इज एन एग्जाम्पल। परफेक्ट। नाउ लेट्स से मेरी जो फर्स्ट सब स्ट्रिंग थी उसके अंदर मेरी इतने वैल्यूज आ सकती थी। नाउ दिस इज एन। नाउ अब एक और कंडीशन है दे रखी क्वेश्चन में, विच इज कि यू हैव लेट्स से 16 लेंथ है। अब उसमें ज़्यादा तीन ही वर्ड्स रहे हैं। तीन वर्ड्स की लेंथ कितनी है मेरे पास में? 4, 2 एंड 2। बेसिकली इतने सेट ऑक्यूपाइड है और बची हुई जो स्पेसेस हैं दे हैव टू बी पास्ड। अब ये नहीं कर सकते हम लोग कि दिस इज एन और बची हुई जो कितनी छः, आई गेस छः, हाँ, जो बची हुई छः मेरे पास में स्पेसेस हैं वो एम्प्टी, मतलब बेसिकली इसके बाद में नहीं रख सकते ऐसे। सो दिस, ये जो बीच की जो स्पेस है ना ये नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ये नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। एंड यहाँ पर इन दोनों स्पेसेस में बेसिकली इस रीजन में और इस रीजन में वी हैव टू पास जो मेरे स्पेसेस हैं। अब इनिशियली तो दो स्पेसेस पास्ड हैं, वी हैव टू पास अबाउट हाउ मच, 6 मोर स्पेसेस टू दिस दिस स्पेसिफिक रीजन। तो वो काम हमने कैसे किया? दैट वॉज डन यूजिंग दिस स्पेसिफिक फंक्शन। नाउ व्हाट दिस फंक्शन डज इज कि दो चीज चेक करता है। क्योंकि क्या है कि इसकी भी प्रोसेसिंग अलग अलग है, लास्ट लाइन के लिए और फर्स्ट लाइन के। एज यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन कि मेरा व्हाट यस, last, for the last line of text it should be left justified, no extra spaces inserted between the words। तो लास्ट लाइन अलग से प्रोसेस होगी और फर्स्ट लाइन आई मीन उसके ऊपर की जितनी भी लाइन्स हमारे वो अलग से प्रोसेस होने वाली है। एंड वी कंसिडर द लास्ट लाइन ऑल्सो एज द फर्स्ट, मतलब मान सिर्फ सिर्फ एक ही लेंथ प्रोड्यूस करनी है तो दैट्स द केस। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि if it is the last line, if it is the last line, so we process it differently using this specific function. And if it is not the last line, we process this using this specific, what happens in this specific function। मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक लॉजिक यूज़ किया है, विच इज़ कि यहाँ पर जा करके बेसिकली मेरे पास में कितनी स्पेसेस हैं पहले ये पता करो। ठीक है, मेरे पास में स्लॉट्स कितने हैं? स्पेसेस पहले पहले मैंने स्पेसेस पता करी। स्पेसेस कैसे पता करी? आई टुक द काउंट ऑफ जस्ट द कैरेक्टर्स, स्पेसेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स का काउंट। यहाँ पर क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वॉज द काउंट ऑफ कैरेक्टर्स। तो मेरे पास में एज जेड इज योर दिस, एज जेड में बेसिकली 8 जो है मेरे पास में वो पास हो रहा है। रिमेनिंग कैरेक्टर्स कितने हुए? 8, इनको इंक्लूड करके ये दो स्पेसेस जो मैंडेटरी है, प्लस जो मेरे पास 6 रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग मेरे पास में 6 कैरेक्टर्स, आई मीन टोटल 8 कैरेक्टर्स है, विच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द 2 स्लॉट्स। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक किया कि दो स्लॉट्स के अंदर कितने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जाने चाहिए। दिस इज योर गुड केस कि भाई मेरे पास में 8 स्लॉट है, मतलब इक्वल 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 जा रही चीज़ें। अब सीन ये होता है एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट, जैसे ये वाला टेस्ट केस है, इस वाले टेस्ट केस के अंदर सीन हो रहा है कि इसकी लेंथ 7 है, 8 9 10 11 12 13 13, देर आर 3 एक्स्ट्रा स्पेसेस, मतलब बेसिकली 3 स्पेसेस को अलॉट करना है वी हैव टू, और किस में? 2 स्पेसेस के अंदर। और एक और कंडीशन दे रही है क्वेश्चन में कि जो हमारे पास में एक्स्ट्रा स्पेसेस है दे हैव टू बी अलॉटेड इन टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द क्वेश्चन और द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। सो वो कैसे किया? दिस इज अगेन सिंपल। वी मूव्ड ऑन टू दी स्लॉट्स। मेरे पास में स्लॉट n माइनस ऑफ, बेसिकली हमने स्पेस पता करी कितनी थी, जैसे आई टोल्ड, जैसे इस वाले केस में क्या था? 16 माइनस ऑफ 3, 16 माइनस ऑफ 13। स्पेसेस के अंदर मेरे पास में कितने आ गए? 3 स्पेसेस वाले। स्लॉट्स कितने आ गए? 2 आ गए, n माइनस ऑफ 1। n इज योर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। नाउ देयर इज वन मोर बेस केस विच इज योर, अगर मेरे पास में स्लॉट 0 होते हैं तो मेरा हमेशा हमेशा द फर्स्ट कैरेक्टर विल बी इन दी फर्स्ट पोजिशन, मतलब कैरेक्टर विल बी ऑन दी लेफ्ट मोस्ट साइड। तो वो लास्ट कैरेक्टर की तरह ही प्रोसेस होने वाला है। सो मेरे जितने भी ट्रेलिंग जीरोज हैं, आई मीन ट्रेलिंग कैरेक्टर्स हैं, उन सभी को मैं ऐसे ही प्रोसेस करूँगा। मेरी जो फर्स्ट कैरेक्टर मैंने एम्बेड किया, देन आई रन ए फॉर लूप एंड जस्ट एडिट दी स्पेसेस आफ्टर इट। नाउ पोस्ट इट। अब इसके बाद में देर इज अ ग्लिच, ग्लिच बोल दो या फिर इज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट कम्स इन। अब मेरे पास में जो इक्वलेंट जो स्पेसेस, मेरे को इवन स्पेसेस जो इतना भी डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, अब जैसे इवन स्पेसेस 3 है, तीन स्पेसेस है, अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने चाहूँ तो हर एक को एटलीस्ट एक एक तो मिलेगा, है ना। सो 1 एंड 1, सो ईवी के अंदर देर इज 1, रिमेनिंग पार्ट्स के अंदर आई हैव 1। ऐसा क्यों? 3 माइनस ऑफ 1 कर लो, आई मीन 3 माइनस ऑफ जितने भी स्पेसेस लॉट के वो कर लो, बेसिकली स्लॉट्स टाइम्स ऑफ योर ईवी, या तो ये कर लो या फिर स्पेसेस डायरेक्टली स्पेसेस एम्परसेंट स्लॉट विच गिव्स यू द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज योर बेसिकली वो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस जो जा रहे हैं हमारे वो आ जाएंगे। आई जस्ट रैन अ फॉर लूप ऑन एवरी इंडिविजुअल स्पेस, मतलब जितनी स्पेसेस है मैं उसके हिसाब से मैंने ये किया है।
मेरे पास में जितने स्लॉट्स जाने चाहिए या फिर जितने स्पेसेस जाने चाहिए, यहाँ पर मैं अगर n-1 की जगह पे स्लॉट्स लिख दिया तो भी बात एक ही थी, क्योंकि स्लॉट्स भी उतने ही है, मेरे पास में n-1 भी उतना ही है, सेम ही बात है। सो जितने भी मेरे स्लॉट्स हैं, हर एक स्लॉट के ऊपर जा करके यू जस्ट हैव टू डू, पहले हमारा जो टेम्पररी वेरिएबल है और जो वर्ड है वो एम्बेड किया, एंड देन यू एडेड अ स्पेस इवन टाइम्स, ठीक है। यू जस्ट अपेंडेड एट द एंड ऑफ दैट स्पेसिफिक वैल्यू, मेरे पास में यू जस्ट एडेड दैट स्पेसिफिक, क्या कहते हैं उसको, द स्पेस, ठीक है, दोज मैनी ट्रेलिंग स्पेसेस। ईवी का मतलब ये कुछ नहीं है, अब यहाँ पर इसको हटा करके आई विल हैव, मतलब ये दिस इज अ सिंगल लाइनर, अगर मैं इसको हटा देता आई माइट हैव टू रन एक फॉर लूप रन करना पड़ता मुझे अपेंड की वजह पे। दिस इज बेसिकली अ फॉर लूप कि भाई ईवी टाइम्स स्पेस आंसर में अपेंड कर दो, दिस इज व्हाट दिस स्पेसिफिक मेथड इज बेसिकली सेइंग, ठीक है। नाउ अब इसके बाद में जितनी भी बार मेरे पास में रिमाइंडर मेरे को ऐड करना है, दैट इज बेसिकली वी आर डूइंग। अब इसको हटा करके आई कुड हैव हैड डन कि इफ अगर मेरे पास में रिमाइंडर एंड आंसर प्लस इक्वल्स दिस एंड रिमाइंडर माइनस माइनस, वो भी इक्वलेंट होता, बात एक ही थी। नाउ इसके बाद में वी जस्ट फाइनली वी आर लेफ्ट विद द लास्ट वैल्यू, मेरे पास में टेम्परेचर जो लास्ट वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर क्या था, हमने n-1 जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स थे उसके हिसाब से प्रोसेस किया, वी आर लेफ्ट विद द वन मोर वैल्यू, तो वो जो आखिरी वैल्यू थी वी प्रोसेस इट इन है। नाइस। नाउ इफ वी आर एट द लास्ट टेस्ट केस, तो वो जो लास्ट टेस्ट केस है उसके लिए क्या, आई मीन लास्ट टेस्ट केस लास्ट लाइन है जो हमारी, उसके लिए कैसे चीज़ों को प्रोसेस करना है, उसके लिए अलग केस है, विच इज़ हमारे जो मेन वैल्यूज हैं उन्हें वी हैव टू लेफ्ट जस्टिफाई दम, एंड द रिमेनिंग ट्रेलिंग स्पेसेस जो है मेरे वो अलग रह जाएंगे। परफेक्ट। सो व्हाट हैपेंस इज कि आई जस्ट रन अ फॉर लूप, आई जस्ट रन अ फॉर लूप ऑन एवरी आंसर प्लस इक्वल से, और बेसिकली सबसे पहले अपना जो वर्ड है वो वी एम्बेडेड, एम्बेड बोल दो या फिर वी पुट इट और वी कंकैटिनेट इट टू द फर्स्ट पार्ट, and then we enter in the trailing zeros, and trailing zeros सिर्फ और सिर्फ लास्ट से एक पहली वैल्यू तक होंगे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है भाई, लास्ट से पहली वाली वैल्यू के लिए वी हैव टू पुट इन, अगर इफ वी आर एट दी लास्ट वैल्यू और टेम्पररी साइज हमारे पास में फुलफिल हो चुका है, दैट्स द केस व्हेन वी आर एंडिंग थिंग्स। उसके बाद में वी जस्ट वही है ट्रेलिंग जीरोज ऐड करना, एंड देन यू जस्ट रिटर्न द आंसर, एंड अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस अबाउट दिस फंक्शन। And that's all for today. Thanks for watching daily, ladies and gentlemen. भाई बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, 27 minutes. I'm really sorry.